any filed by any of these factions would be before the Delhi High Court, and then the matter would probably reach the topmost court of the country. But since the Maharashtra Constitution bench is already taking up the matters, we might see that some kind of a mentioning also takes place in the topmost court of the country. So all avenues are open before the Uddhav Thackeray camp to actually challenge this. However, the scope of judicial review remains to be very, very less, since the Election Commission of India is in itself, in fact, a constitutional body, and it had held lengthy hearings in this matter. Remember that the hearings in the matters were continuing. Ananya, just hold on to your thoughts. Arvind Sawant is joining me now on the broadcast. This certainly is going to be seen as a big setback for Uddhav Thackeray group. Mr. Sawant, how are you planning to take this up? We will move to the Supreme Court. It's total bizarre, you can say. It's not bizarre. It's absolutely, you can say, misjudgment, and it was, manipulated. They were saying it since beginning that we are going to get it, as if the course of the Election Commission was in their hands. So it is hand in glove with the ruling party, and that they have done it. So you are alleging that the Election Commission is hand in glove with the central government, with the BJP? Absolutely. Is that what you are saying? This is obvious. This is very open now. It was not a secret. We were maintaining the discipline, but now it is very clear. What do you mean by party? How can you define a party? Supreme Court is still, the decision is pending in the Supreme Court. What was the hurry? Today, after the Supreme Court order, they hurriedly have given the directive. They want to create a pressure on the Supreme Court order also. No, but why are you saying that they are trying to create pressure on the Supreme Court? Look, there were two groups, the Uddhav Thackeray group, the Shinde group, both of them are fighting for the same symbol. It had to be decided by the Election Commission. The Supreme Court was waiting for the Election Commission to take its move. The order has now come from the Election Commission. Why should it be seen that all the institutions are conspiring against your group? So, that whether it is a proof that the people who left party is itself a conspiracy. They themselves are admitted on the floor of the assembly. Why don't you understand that? They themselves are for how long they were conspiring against us. And it's on the record. What do you want for that? It's proven. It is a conspiracy. It is a revengeful action. Nothing else. But the Election Commission has gone with the precedent. They have gone with what happened in the Janata Dal dispute case. And that is the reason why they have, gone with the numbers, that in terms of the number of support that is there with the Shinde faction is of the number of MPs, the number of MLAs who are standing with them is much more than the Uddhav Thackeray faction, and hence they are going with the numbers. No, please try to understand. The party is outside, and the party which is there in the assembly or parliament is a different party. And that party doesn't the original party. What is happening in Goa? Mr. Kapil, senior advocate Kapil Sibal has yesterday only reiterated it in the Supreme Court. When all the MLAs from Congress party left the Congress party and joined BJP in Goa, does it mean the Congress party has vanished? No, but then the Congress party there is not claiming for the symbol. The question is that there is a precedent that is there before the Election Commission, which is the case of the Janata Dal dispute. That is what we are saying. That is what we are saying. As the MLAs and MPs doesn't mean the party. The party is independent of that. Try to understand. Party is absolutely different party. This has got a clear cut. It's a clear picture. So, the order, and I am looking at this order, Mr. Sawant, it says very clearly that the outcome of the majority test was in favor of Mr. Shinde, that they had 40 MLAs supporting petitioner, they garnered 36,57,327 votes out of the total number. The number of MLAs who were there again supported him, and hence it's only going with the precedent and going with the numbers. This is how the Election Commission will be going with. I mean, how is the Election Commission supposed to know that there is a party which is in the house and there is a party which is outside the house?
How they supposed to do means they themselves only demanded it. They given in the constitutional body of the party and the members. We have submitted 20 lakh forms to the election commission, whereas they could not even submit 4 lakh forms. We have submitted the affidavits, 4 lakh affidavits, to which there are hardly 1 lakh affidavits are there with them. Do you want to continue with the same thing? But Mr. Sawant, what next for you? Because the order says, Mr. Sawant, the order is saying, Mr. Sawant, the order is saying that there are 13 MPs supporting the petitioner, and on the other side, which is your side, there are just 5 MPs. Madam, you are again and again saying the representatives. You are again and again quoting the number of the MLAs and MPs. So we too have MLAs, MLCs and MPs with us. Why don't you quote that number also? Number of MLAs and MPs do not mean the party. The party means the party's office bearers. The party means the party's members. And members, we have 20 lakh odd members with us. Okay. Thank you so much for your time. So, Shiv Sena, Uddhav Thackeray faction member Arvind Sawant there saying that they are going ahead and approaching the Supreme Court. Their argument is that why did the Election Commission of India come up with an order when the case is pending before the Supreme Court? Ananya, the order clearly talks about Janata Dal dispute. It says very clearly that this is how it was settled, that the party or the faction which had maximum numbers of MPs and MLAs will get the symbol, and hence the bow and arrow going with Shinde faction, which had the support of the MLAs and also the MPs. Definitely, Maria, and you remember when this election war has become, the symbol war had started at the Election Commission of India, the Eknath Shinde faction had in fact come in with a truckload of documents and affidavits stating in their favor that the support is with the Eknath Shinde camp, and definitely whenever these issues come up, whenever such issues come up, the flow test or the numbers are the deciding factor. Either it's the Election Commission of India or it's the Supreme Court. We remember when the Maharashtra political fiasco had broken out before the topmost court of the country, it had not in fact stayed the flow test, saying that the numbers are something that are very, very important in the democracy. And here also the Election Commission of India has said that the numbers belong to the Eknath Shinde faction, and hence the symbol also goes to in fact the Eknath Shinde side. However, we were in touch with some of the legal team of in fact both the sides, and we are seeing that this order probably would be challenged before the Supreme Court or the Delhi High Court, which is a matter of time, and we'll get to know about this. But at the same point of time, we also have to remember that when this issue had cropped up before even this war had actually begun at the Election Commission of India, the Supreme Court was very, very clear in its part that constitutional bodies like the Election Commission of India leave a very, very narrow or a very, very small scope of judicial review, and that's the reason why this order probably would not be stayed by the topmost court of the country or even the Delhi High Court, because this is an order that's been passed by a constitutional body. The issue before the topmost court of the country is very, very different. It is on the issue of whether the speaker can actually decide the disqualification petition when there is a motion moved against his own existence. So that is a very, very different issue. But when we talk of the Election Commission's order, this is something that has come in from a constitutional body after long hearings. We've seen how when the Election Commission of India was actually hearing this matter, it had actually continued for months, and whenever the hearing used to be there, it used to continue for almost the whole day. The point, Ananya, that has been made here in the order of the Election Commission is the test of majority. The test of majority stood with the Shiv Sena camp, Eknath Shinde camp, and hence they have got the symbol of the party. Now the question is, what next for Uddhav Thackeray if this becomes like a prolonged legal battle? You know, Vinaya Deshpande continues to be with us as well. Vinaya, the big challenge certainly is the upcoming BMC elections, but largely it is going to be a huge loss of face for Uddhav Thackeray. Well, absolutely, Maria, and there's no doubt that this is a setback for Uddhav Thackeray. Remember, the most important point that will be crucial for the camp is also what is mentioned on page number 74 of the Election Commission order. Now, there were continuously these two debates that were going on. First was about the legislative strength, and the second was about the organizational strength. With respect to the organizational strength, Uddhav Thackeray kept on saying that he had lakhs of workers, and that is why their affidavits would form an important part
for the Election Commission to decide the organizational strength, because the whole argument of Uddhav Thackeray faction was that the party is not just the elected legislators but also the organizational structure. Now, ruling on that, the Election Commission has said that legislative wing Shiv Sena, there is a clear answer as to which faction enjoys the majority support. But when it comes to organizational wing, it is found to be yielding indeterminable and non-conclusive outcome. Yes. This will be a major point for Uddhav Thackeray faction, probably to challenge this as well. As of now, this definitely is being looked at as a setback. But let us also understand, Maria, that this comes at a crucial political juncture in Maharashtra, where we are seeing that the BJP is already wary of the kind of sympathy wave that is being generated for Uddhav Thackeray faction. At such a crucial juncture, the fact that the name of the party which was formulated by Uddhav Thackerays father, the symbol of which was decided by Uddhav Thackerays father, whether this will be seen as another sympathy garnering faction, because remember, in the politics of regional arenas, we have seen that several regional parties are personality driven parties and not necessarily name driven. We have seen this in the country's politics as well. Whether this will be a setback or whether Shiv Sena will on one hand challenge this and on the second hand use it as another sympathy factor in order to move ahead for the PMC polls is something that will remain to be seen. Back to you. Okay. Rao Saab Danve, Union Minister, is joining me on the phone line. Danve Saab, उद्धव ठाकरे का जो फैक्शन है वो बोल रहा है इस पर भाजपा का हाथ है, इसीलिए उनको शायद ये सिंबल नहीं मिला। मुझे ऐसा लगता है कि कोर्ट पे भरोसा रखना चाहिए। बयानबाजी से कुछ नहीं होता, जो कानून से होता है वो कोर्ट करता है। और मुझे ऐसा लगता है कि इनका अगर कोर्ट पे ही भरोसा नहीं तो इन पे क्या लोग भरोसा रख सकते हैं। ये कोर्ट का मामला है, कोर्ट ने रिजल्ट दिया है, इसके सिवा मुझे ज्यादा कुछ बोलना नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने फैसला दिया है, कोर्ट में अभी भी ये मामला चल रहा है। मतलब इलेक्शन कमीशन ये भी तो ये कोर्ट ही है, ये भी तो निर्णय करने वाली एक एजेंसी है। उनका निर्णय आज तक जब भी चुनाव आयोग के पास समय जो भी निर्णय दिया चुनाव आयोग ने, वो सबने मान लिया। लेकिन दानवे साहब, सवाल तो ये उठेगा ना कि पूरा लेगेसी जो है वो तो उद्धव ठाकरे के साथ है। बाला साहब ठाकरे के वो ग्रैंडसन हैं, तो सन है, तो इसलिए उनका पूरा लेगेसी तो उन्हीं के साथ होगा। कौन क्या बोलता है वो छोड़ो, चुनाव आयोग का फैसला है और मुझे ऐसा लगता है कि सबने मानना चाहिए और वो सही है, बस। तो आपका कहना है इसमें भाजपा का कोई हाथ नहीं है? कंस्पिरेसी की बात कर रही है उद्धव ठाकरे का क्या? भाजपा का क्या संबंध आता? इनकी नाकामी छुपाने के लिए भाजपा का नाम हमेशा लेते रहिए और लेने दो इनको, हम इससे बात नहीं करेंगे इस विषय पे। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सो द ऑर्डर क्लियरली टॉक्स अबाउट दैट before the election commission the question was should it go with the majority test, and the majority test clearly stands with the Shinde camp because they had the support of the MPs and the MLAs. He had proven his numbers on the floor of the house. On the other hand was the organizational affidavits that had been submitted by the Uddhav Thackeray camp, in which they had put out details of a number of party leaders, a number of party workers, supporters coming out in his support. But the precedent before the election commission is the Janata Dal matter. The election commission clearly saying that they have gone with the Janata Dal dispute, in which it was not about manipulative numbers, because they are saying that as far as organizational display of strength is concerned, that could be manipulated. But if a faction or a group has won on the floor of the house, that means that they have the real strength. So Uddhav Thackeray camp clearly now saying that they will be approaching the Supreme Court. The matter is already in the Supreme Court. But Guru Prakash Paswan, the question certainly would be that this could really turn the table. Yes, it's a shot in the arm for the Shinde camp, but here is Uddhav Thackeray, who will win the support of the people. There is the sympathy factor. There is the victim card. Maria, whoever wins the support of the people, that is a question for the future. But who won the support of the people in the last Maharashtra Assembly election? I'm sure you categorically remember the single largest party was the Bharatiya Janata Party. It was the Uddhav Thackeray faction that eventually led to the backstabbing of the Bharatiya Janata Party.
We have to understand a couple of things. Election Commission of India is a constitutional body. Election Commission of India is an independent autonomous agency that has taken into account each and every evidence, like the previous reporter also mentioned, the floor test number 1, the numbers number 2. Everything is in favor of the Eknath Shinde faction. So there is absolutely no question at all. Second, we have to also understand this is the true spirit of democracy. You are from Bihar, I am from Bihar. Lalu Yadav ji used to say, Rani के पेट से राजा नहीं निकलेगा. तो ये डेमोक्रेसी में कोई भी व्यक्ति जिसमें कैपेसिटी हो, anyone with any leadership skill, with competence, who can be the voice of the marginalized, who can actually represent the concerns, the aspirations of the people, is entitled to become a leader. And Election Commission of India has precisely done this after taking into account each and everything, after giving relevant pace of hearing. I'm sure Election Commission of India heard the Shiv Sena faction of Uddhav Thackeray as well. They heard the faction of Eknath Shinde as well. So this decision is an absolutely consultative, unanimous and democratic decision. And whatever the Uddhav Thackeray faction may say, this is also reflective of the will of the people. The numbers, the MLAs, the people of Maharashtra are strongly supporting in favor of Mr. Eknath Shinde, and this decision of the Election Commission of India is just a reflection of that sentiment of people of Maharashtra, Maria. Okay, you are saying that this is a reflection on the sentiment of the people, but even the Election Commission is not talking about it in those lines. But yes, the big test before this group, the new group of the BJP and Eknath Shinde Shiv Sena will be the real test would be in the court of the people, and let's see how that really pans out. But when you are coming to you, are you expecting some kind of press conference by the Chief Minister himself? This certainly proves that he has the support and now the party. Okay, Ananya, if you can hear me. Okay, we'll try and connect with the reporters in just a bit. But the breaking news that is coming in now is that this is a major victory for Eknath Shinde, the present Chief Minister of Maharashtra, where he has won the symbol of the Shiv Sena. The bow and arrow symbol is now with Eknath Shinde, the man who actually, did that coup in which the entire party, along with its MPs and MLAs, shifted towards the Eknath Shinde camp. The question is, will it ensure sympathy for Uddhav Thackeray? Will he get the sympathy of the people and also of the Shiv Sena outside perhaps the city of Mumbai? A lot of questions that remains. What will be the immediate implication of this? This is the big political story that we are tracking this hour. Let me go back to Guru Prakash Paswan. Of course, the big question certainly would be, how will it be seen on ground in Maharashtra? The fact that Balasaheb Thackeray's legatee, who was seen as Uddhav Thackeray, has that legatee debate also been settled with this bow and arrow symbol going with Eknath Shinde, the present Chief Minister, who says that he is the real Shiv Sena? Has this decision by the Election Commission settled the real Shiv Sena debate, where the real Shiv Sainik is Eknath Shinde? Can we expect a press conference by the Chief Minister himself, Vinaya Deshpande? We certainly would expect him to speak. He has been touring the state continuously. We will expect him to talk about this because this is a massive shot in the arm for him and his entire faction. They have been fighting for this tooth and nail. In fact, strategies had been planned about this time and again, and we had seen that not just the entire legal battery, but also an entire branch of political activists and strategists were behind Eknath Shinde in order to sculpt this victory for him. Clearly, this is a massive shot in the arm, as we know that the leaders have already started gathering at Varsha Bungalow, where we will possibly see not just a celebration, but also an address of sorts. So clearly, at this juncture, this is being seen as a massive victory for Eknath Shinde, who has fought tooth and nail for this victory, because these are the two fangs of the same battle. One was going on in front of the Election Commission, the other which goes on in front of the Supreme Court, which is with respect to the disqualification petition, and that will be particularly a more important and strategic victory with respect to the current government,
But so far as the long-term impact of this move is considered, this is effectively a successful way of breaking down the Shiv Sena, which has been a massive regional force in Maharashtra. So, Vinaya, should we see that the BMC elections will now happen sooner? Now that the real Shiv Sena debate has been settled by the Election Commission, are you sensing that the BMC elections will now be, perhaps announced soon? It looks unlikely as of now, Maria, because we have seen that there are at least two more things on which the decision of local body elections in Maharashtra hinges. One of them is with respect to the OBC reservations, and the other is with respect to the delimitation of wards in Mumbai. Both these things are under challenge in the legal scrutiny, and that is why it is likely that till those orders come, it will be difficult for any elections to take place. We have seen that these elections have been put forth for months at end. We were expecting these elections to happen last year. They have been postponed indefinitely. We haven't yet heard about when they will be announced. There was at least a sense in January that by March these elections would likely take place. But as of now, it does not seem like these elections will be announced any soon, particularly because there are two other legal battles that are still pending with respect to decision of the local body polls. But clearly, whenever they are announced, this is going to be an important decision that has been handed out by the Election Commission today that will play a role in at least creating a confusion in the minds of the voters, because now it is very clear that it is Eknath Shinde who will, at least on paper, carry forward the mantle of the Shiv Sena as a regional force, a Hindutva party, and also the symbol. Back to you. And I'm looking at the list of lawyers. In this particular case, it was Mahesh Jethmalani, Maninder Singh, top lawyers of the Supreme Court on one hand versus Devdutt Kamath, Kapil Sibal on the other hand. And of course, this will be playing out in the Supreme Court. But if you look at the argument that has been made by the petitioner in this case is Mr. Eknath Shinde. He has got a shot in the arm. The order is in his favor. The argument has been given clearly on the basis of the floor test. It is about the majority, the legislative strength. The legislative strength is something that the Election Commission has gone with, and that has been the basis on which a similar debate in the past related to Janata Dal dispute was settled. So, going with the precedent, they have gone with the Janata Dal dispute, and going ahead with it, they have said that as far as the numbers, the MPs, MLAs are concerned, the local body members are concerned, they stand with Eknath Shinde. Talking about the political ramifications, will there be some protest that will be held by, in fact, Sanjay Rawat of Uddhav Thackeray camp is speaking. Let's listen in. ये फैसला नहीं, ये न्याय नहीं। जैसे महाराष्ट्र में सरकार बनी, जिसको कहा जाता है छोटे सरकार, करोड़ों रुपए ऊपर से नीचे तक पानी की तरह बहाया, वो पानी कहाँ तक पहुँचा है ये आज देश ने देखा, लोकतंत्र ने देखा। लेकिन हमें कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं। जनता हमारे साथ, हम नया चिन्ह लेकर जाएंगे और जनता के दरबार में फिर एक बार यही शिवसेना खड़ी करके सर्वोच्च न्यायालय में फायदा होगा। दिन भर में दूसरी बार शिवसेना के खिलाफ फैसला आया के खिलाफ लोकतंत्र बचा ही नहीं। सभी ये संस्थाएं जो है इलेक्शन कमीशन से लेकर न्याय व्यवस्था, राज्य एजेंसी, सब गुलाम बनकर बैठे हैं। तो क्या कर सकते हैं? ये लोकतंत्र की हत्या है। आपको लगता है सर्वोच्च न्यायालय में फायदा होगा इसका? इस चुनाव आयोग के फैसले को फायदा हो या नुकसान हो, जनता के न्यायालय में जाकर न्याय मांगे। चुनाव आयोग के इस फैसले को ठाकरे को सर्वोच्च न्यायालय में We have now a Shinde group member Rahul is joining me now. Rahul, किस तरह से देख रहा है शिंदे साहब का फैक्शन ये डेवलपमेंट? ये तो बहुत बड़ी जीत है उनकी। देखिए ये बहुत बड़ी जीत है और पूरे महाराष्ट्र में अभी खुशी का माहौल है और हम मानते हैं कि शिवसेना प्रमुख बालासाहेब ठाकरे जी ने हमको आज आशीर्वाद दिया है, क्योंकि शिवसेना प्रमुख बालासाहेब ठाकरे के जो हिंदुत्ववादी विचार थे वो एकनाथ शिंदे साहब 40 विधायक 13 सांसद आगे लेके जा रहे थे। जो बालासाहेब ठाकरे ने पूरे अपने जिंदगी में कांग्रेस का विरोध किया, कांग्रेस के विचारों का विरोध किया, कांग्रेस के धोरण का विरोध किया, लेकिन बालासाहेब ठाकरे के जाने के बाद
बाला साहब ठाकरे जी को पता नहीं था कि मेरे जाने के बाद जिसके हाथ में मैं कमान दे रहा हूँ, जो मेरे पुत्र है, मेरे पोते हैं, वो मेरी पार्टी बेचने का ही काम करने वाले हैं। मतलब बाला साहब ठाकरे जी ने पूरे जिंदगी में जिनका विरोध किया उसी पार्टी में अपना शिवसेना पार्टी उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे ने उसको वहां पे कर दिया। और एकनाथ शिंदे साहब, ये 40 विधायक थे, जो 13 सांसद है हमारे, इनका ये कहना था शिंदे साहब का, बाबा ये बाला साहब ठाकरे के विचार मरने नहीं चाहिए, बाला साहब ठाकरे के विचार जिंदा रहने चाहिए, आगे लेके जाना चाहिए। लेकिन राहुल, आपको ये नहीं लगता कि लेकिन अगर वो बाला साहब के बेटा हैं उद्धव ठाकरे, तो जो सिंपैथी है उनके साथ है, जो भी आप लोगों का दबदबा है वो शायद एमएलएस के साथ है, लेकिन जो जनता है वो उनके साथ खड़ी है, यही बोल रही है उद्धव ठाकरे ग्रुप। नहीं, अभी जो जिनका पराभव होता है वो पराभव के मानसिकता से ऐसे बात करते हैं। पूरी आप देखेंगे तो 6 महीने में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब का इतना महाराष्ट्र में पूरा समर्थन मिल रहा है, हजारों की लाखों की भीड़ उनकी सभा में आती है, मतलब जनता का समर्थन है। एकनाथ शिंदे साहब ने जो भूमिका लेके वो आगे जा रहे हैं, महाराष्ट्र की जनता का उनको समर्थन मिल रहा है। सांसद आ रहे हैं, नगर सेवक आ रहे हैं, पार्षद आ रहे हैं, जेडपी सदस्य आ रहे हैं, पंचायत समिति आ रहे हैं, ये तो जनता ही है ना। जनता सपोर्ट कर रही है, इसलिए एकनाथ शिंदे साहब का महाराष्ट्र में आगे जा रहे हैं। अगर ऐसा रहता तो जनता कब उनके रैली में हिस्सा नहीं लेती थी, भीड़ नहीं उमड़ती थी। तो जनता आती है, इसलिए एकनाथ शिंदे साहब का हौसले बुलंद है, हमारे हौसले बुलंद है। और आज जो निर्णय आया है, देखिए संजय राउत का अभी भी बयान सुना, उन्होंने अभी इलेक्शन कमीशन के ऊपर आरोप लगाया कि ये बेचा है, मतलब जो निकाला है डिसीजन ये बेचा है, खोखे का है। मतलब महाराष्ट्र की जनता रहने दो, जनता का आशीर्वाद एकनाथ शिंदे साहब के साथ क्यों है? क्योंकि एकनाथ शिंदे साहब बाला साहब के विचार आगे लेके जा रहे हैं। और संजय राउत जी का भी बयान आ रहा है, उद्धव ठाकरे, देखिए उद्धव ठाकरे बाला साहब के सुपुत्र है। बिकॉज संजय गुप्ता जो शिवसेना उद्धव फैक्शन ग्रुप के हैं वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय गुप्ता जी, कितना बड़ा सेटबैक देखती हैं उद्धव ठाकरे का कैंप आप लोग? आगे क्या होगा? पार्टी तो हाथ से निकल गई। नहीं, पार्टी हाथ से नहीं निकली है। ये इलेक्शन कमीशन का फैसला कोई अंतिम फैसला नहीं है। हमारे देश में न्यायिक व्यवस्था है। अभी इलेक्शन कमीशन ने जो ये फैसला लिया है, ये बिल्कुल सरकार के प्रेशर में ही लिया है। और इलेक्शन कमीशन एक निष्पक्ष निर्णय लेने में और निष्पक्ष संस्था है, मगर जिस तरह का डिसीजन इलेक्शन कमीशन ने लिया है, ये बिल्कुल इससे साफ पता चलता है कि आज ये सरकारी तंत्र सरकार के। लेकिन संजय गुप्ता जी, जब एमएलएज एमपीज आपके साथ खड़े नहीं थे तो इलेक्शन कमीशन को ब्लेम करने की क्या जरूरत है? अगर उद्धव ठाकरे के साथ उनके पार्टी के एमएलएज, विधायक और जो सांसद है वो खड़े होते तो शायद ये नहीं होता आज। देखिए, विधायक, एमपीज, काउंसलर्स, ये सभी उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व में इलेक्शन लड़े थे और उद्धव जी के नेतृत्व में ही इन्होंने इलेक्शन जीता था। ये इस शिवसेना को छोड़ करके अलग से लड़ते ना इलेक्शन, उद्धव जी के नेतृत्व में लड़ करके ये चुनाव जीते और जीतने के बाद सरकार में रहे। राहुल, आप इनको जवाब देंगे? संजय गुप्ता जी को जवाब दीजिए। मेरा गुप्ता साहब से यही कहना है कि देखिए, उद्धव ठाकरे तो पक्ष प्रमुख को टाइम पे थे, लेकिन जो 2019 में जो विधानसभा के चुनाव महाराष्ट्र में हुए, ये गठबंधन के चुनाव थे। मतलब भाजपा, भारतीय जनता पार्टी गठबंधन था। नहीं, गुप्ता साहब सुनिए, मेरा यही कहना है कि इलेक्शन निर्वाचन आयोग भी एक स्वायत्त संस्था है। निर्वाचन आयोग स्वायत्त संस्था, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि बाबा निर्वाचन आयोग आप लोग सरकार में साथ नहीं थे क्या? उद्धव जी ने या शिवसेना ने हमेशा मुद्दों के आधार पर ही समर्थन नहीं दिया अपना? ऐसा कब हुआ है कि कांग्रेस को कभी समर्थन नहीं दिया? अगर उद्धव ठाकरे बाला साहब के विचार अगर बेचने का काम नहीं करते थे, आपके परिवार को खाली मुख्यमंत्री दिखाने के लिए अपनी बड़ी इतनी पार्टी जो पिछले 55 साल से बाला साहब ने जिस विचारों पे जिस बुनियाद पे पार्टी को बनाया था, वो पार्टी कांग्रेस को बेचने का काम किया है। और आप तो बड़े नेता है, बाला साहब ठाकरे का एक बयान था, बाला साहब का बयान था, जिस दिन मेरी शिवसेना की कांग्रेस होती हुई मुझे दिखाई देगी तो मैं उस दिन मेरी पार्टी बंद करूंगा, ये बाला साहब का बयान था। बाला साहब जाने के बाद क्या हुआ? अशाच प्रकारचा निर्णय दिलेला आहे आणि विशेषतः आमदार, खासदार यांची संख्या लक्षात घेऊनच निर्णय झालेले आहेत। याचं कारण एखाद्या पक्षाचं रिकॉग्निशन त्या पक्षाला मिळालेल्या वोट संख्येच्या आधारावर असतं आणि ती वोट संख्या किंवा तो वोट पर्सेंटेज आमदार, खासदार यांच्या माध्यमातून ठरत असतं। अर्थात मी काय अजून पूर्ण निकाल वाचलेला नाही, त्यामुळे मी निकालाचं विश्लेषण आता करणार नाही।
पण मी अत्यंत मनापासनं एकनाथरावजी शिंदे यांचं अभिनंदन करतो आणि शिवसेनेचं शिंदेजींच्या नेतृत्वात अभिनंदन करतो. न्यायालयात जाण्याच्या तयारीत आहे. या विरोधात भेदभाव झाला, दबाव होता निवडणूक आयोगावर असं संजय राऊत म्हणाले. मी हे 5-7 दिवसापूर्वीच घोषित केलं होतं की इलेक्शन कमिशनचा निर्णय काय आला त्यांच्या बाजूने आला तर इलेक्शन कमिशन फ्री अँड फेअर, त्यांच्या विरोधात आला तर दबाव, सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय त्यांच्या बाजूने आला तर सर्वोच्च न्यायालय फ्री अँड फेअर, सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय त्यांच्या विरोधात आला तर त्याच्यावर दबाव. त्याच्या रिॲक्शन आम्हाला माहिती आहे. माझं स्पष्ट मत आहे की शेवटी या देशामध्ये न्याय आहे, कायदा आहे आणि संविधान आहे. याच्या अंतर्गत झालेला निर्णय आहे. जरूर त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात जावं किंवा उच्च न्यायालयात जावं, तो त्यांचा अधिकार आहे. हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बालासाहेब ठाकरे जी के विचारों पर चलने वाली शिवसेना यानी मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे, इनकी शिवसेना को शिवसेना का चिन्ह धनुष्य बाण और शिवसेना का नाम मिला है. अब ओरिजिनल शिवसेना ये एकनाथ शिंदे जी की शिवसेना बनी है. मैं एकनाथ शिंदे जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ. हम लोग पहले दिन से इस बारे में कॉन्फिडेंट थे क्योंकि इलेक्शन कमीशन के अलग अलग पार्टियों के बारे में इसके पहले के अगर आप निर्णय देखेंगे तो इसी प्रकार के निर्णय उन्होंने दिए हैं. इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि हमें जो विश्वास था आज उस विश्वास को पूरे तरीके से बल मिला है और असली शिवसेना बाला साहब के विचारों पर चलने वाली शिवसेना ये एकनाथ शिंदे जी की ही है. ये आरोप लगाया जा रहा है कि जिसकी उम्मीद थी वही हुआ शिवसेना की तरफ से, ऐसा वक्तव्य आ रहा है. देखिए, इससे अलग वक्तव्य वो दे ही नहीं सकते. उनके दोनों प्रकार के वक्तव्य टाइप करके रखे हुए थे. अगर उनके पक्ष में निर्णय आता तो उनका वक्तव्य था कि इलेक्शन कमीशन ने बहुत सही काम किया है, फ्री एंड फेयर काम किया है. और दूसरा उन्होंने टाइप करके रखा था कि उनके विरोध में आएगा तो इलेक्शन कमीशन दबाव में है. वो उनकी स्क्रिप्ट पर चल रहे हैं. लेकिन इलेक्शन कमीशन हो या सुप्रीम कोर्ट हो, ये कानून से चलता है, ये न्याय से चलता है, ये संविधान से चलता है. मंत्रिमंडळ विस्ताराचा मार्ग मोकळा झाला. या संदर्भात मुख्यमंत्री सांगू शकतात, तो मुख्यमंत्र्यांचा अधिकार असतो. इसी तरीके से चुनाव आयोग दे सकता है जो जब आप लोगों ने सरकार का गठन किया था उस समय थी ऐसी उम्मीद. देखिए, ये पूरी उम्मीद हमको इसलिए थी क्योंकि आखिर इलेक्शन कमीशन को उनके पुराने फैसलों के आधार पर चलना पड़ता है. और इससे पहले अलग अलग पार्टियों में जब विभाजन हुआ तो इलेक्शन कमीशन ने इसी प्रकार का फैसला किया है और अलग अलग इलेक्शन कमिश्नर से इसी प्रकार का फैसला किया है. इसलिए हम लोगों को ये उम्मीद थी कि उसी प्रकार का फैसला हमारे बारे में भी आएगा. आगामी निवडणुकांमध्ये याचा फायदा होईल या निकालाचा? 100% फायदा होईल. कारण आत्तापर्यंत एक संभ्रम होता की खरी शिवसेना कोणाची, आणि म्हणून अनेक लोक, विशेषतः अनेक शिवसैनिक हे कुंपणावर होते आणि वाट बघत होते खरी शिवसेना कोणती. आता त्यांना समजलंय खरी शिवसेना कोणती, त्यामुळे ते खऱ्या शिवसेनेत जातील. काही आमदार खासदार पण येणार का? बघत राहा. And the celebrations have started outside Varsha Bungalow, that is the Chief Minister's residence in Mumbai. There are visuals on your right side of your screens. There are celebrations that have started also in Pune. All these celebrations taking place in the Eknath Shinde camp, and you heard from the Deputy Chief Minister. He said that if anything, this is essentially validation of the transition that has happened. Let's listen into more reactions that have come in. उनके वजह से ही, संजय राउत जी के बेताल वक्तव्य के वजह से ही शिवसेना फूटी है. अभी भी सुधरो संजय राउत जी, आपके वजह से एक पार्टी फूटी है. पार्टी का चिन्ह चला गया, नाम चला गया एक आदमी के ऊपर से. इसीलिए हम यही कहते हैं कि हमें उनके बारे में कुछ नहीं कहना. आगे जाके जो शिवसेना प्रमुख हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी का जो सपना था वो पूरा करने के लिए हम सब शिवसैनिक आगे बढ़ेंगे. अभी कितनी खुशी और किस तरह सेलिब्रेट? आज तक की सबसे ज्यादा खुशी अभी हमें हुई है जो शिवसेना प्रमुख जी का शिवसेना और धनुष्यबाण चिन्ह जो हमको मिला है.
इससे ज्यादा खुशी हमें कभी नहीं हुई थी। इतनी अच्छा दिन है आज का। Krishna Hegde, former MLA, also who joined the Eknath Shinde faction way back in November, is also joining me on this broadcast. कृष्णा जी, किस तरह से देख रहे हैं आप लोग? लेकिन जो उद्धव ठाकरे का ग्रुप है वो मानते हैं कि अभी भी उच्च न्यायालय से फैसला नहीं आया है, तो उन्हें उम्मीद है। देखिए, ये जीत हमारी पार्टी की है, शिंदे साहब की है। ये जीत सम्मान्य हिंदू हृदय सम्राट बालासाहेब ठाकरे जी की है, जो कभी उनके जीवन काल में कांग्रेस या राष्ट्रवादी कांग्रेस के साथ कभी हाथ नहीं मिलाते। ये जीत सभी पार्टी वर्कर्स की है। ये जीत बीजेपी और शिवसेना जो 2019 में एक साथ में अलायंस लड़ी थी, और जो पब्लिक ने हमें मैंडेट दिया था गवर्न करने के लिए, ये पूरी महाराष्ट्र की पब्लिक की जीत है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबसे ज़्यादा खासदार, सबसे ज़्यादा विधायक, सबसे ज़्यादा एमपी, सबसे ज़्यादा एग्जीक्यूटिव मेंबर्स, सबसे ज़्यादा स्टेट प्रेसिडेंट्स, सबसे ज़्यादा लोक संख्या, सबसे ज़्यादा मेंबर्स सब हमारे पास है। और इसमें कोई चौंकाने वाली बात नहीं थी। ये एक्सपेक्टेड था कि हम सिंबल और पार्टी का नाम भी हमें मिलेगा, क्योंकि हम ही असली शिवसेना, हम पहले दिन से कह रहे हैं। और जो नाम इन्होंने हमें कहा था कि गद्दार है, रिबेल है, हमें इन्होंने छुरा बोका, और अब इन सबको पूरी सच्चाई पता चल गई है, इनको असलियत पता चल गई है। इलेक्शन कमीशन ने एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया है और हम इसका स्वागत करते हैं। हम इसके साथ ये भी आपने कहा कि सब आप लोग सब इसका स्वागत करते हैं और ये लाजमी है, लेकिन आपको नहीं लगता कि जो उद्धव ठाकरे के ग्रुप बोल रहा है कि मान लिया एमएलए और एमपीज आपके साथ हैं, जो रियल शिवसेना है, जो जनता की शिवसेना है, जिसमें जो पार्टी के कार्डर हैं वो उनके साथ खड़े हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन है अभी भी उनके साथ है? देखिए, मैंने अभी आपको गिनाया कि 18 में से 15 एमपीज हमारे पास है, 56 में से 40 विधायक हमारे पास है, स्टेट प्रेसिडेंट हमारे पास है, एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर्स हमारे पास है, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हमारे पास है। अभी जो बचे कुछ उनके पास है वो भी असली शिवसेना में आएंगे, क्योंकि धनुष्मान भी हमारे पास है और शिवसेना का नाम भी हमारे पास है। तो आप असली शिवसेना का डिबेट आज सेटल हो गया, आप यही मानती हैं? बिल्कुल, असली शिवसेना का डिबेट कभी था ही नहीं। खाली वो कह रहे थे बीइंग अ माइनॉरिटी पार्टी के वो असली शिवसेना है। हम मेजॉरिटी पार्टी रहकर भी चुप बैठे, लेकिन हम हमेशा कहते हैं और मानते हैं, और आज सच्चाई भी हो गई है कि हम ही असली शिवसेना है, और इसीलिए हमें सिंबल भी मिला है। लेकिन क्या एकनाथ शिंदे कोशिश नहीं कर सकते थे कि उद्धव ठाकरे को समझाएं, आप लोग सब मिलकर के कोशिश करते तो शायद शिवसेना टूटती नहीं और आज जो डिसीजन हुआ है वो भी नहीं होता? देखिए, हमने बहुत टाइम से कहा था कि पार्टी में गलत चल रहा है। जो मैंडेट दिया है वो बीजेपी और शिवसेना को एक साथ दिया है, वो मैंडेट हिंदुत्व के लिए था। और 2019 में जब करोड़ों लोगों ने हमको वोट दिया है एमपी इलेक्शन में और एमएलए इलेक्शन में, तो उन्होंने मोदी जी को देखकर, बाला साहब को देखकर, हिंदुत्व को देखकर वोट दिया था। उन्होंने ये बात के लिए वोट नहीं दिया था कि पार्टी अलग होके विचारधारा छोड़कर कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस के साथ हाथ मिलाए। कृष्ण जी, हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि अभी जो विजुअल्स आ रहे हैं वो these are visuals coming in from Pune where the Shinde faction group is celebrating on the streets. So कृष्णा हेगड़े जी, क्या कुछ बड़ा जश्न होगा इस पर, इस जीत के बाद? बिल्कुल होगा। मुझे लगता है कि आज हमारे शिवसेना के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। ऐतिहासिक दिन इसके लिए है क्योंकि हमने गदर किया था, लेकिन हमें गद्दार नाम दिया गया था। और आज जो गदर है, जो ब्रेव हार्ट है, जो रिबेल है, उसकी जीत हुई है, सच्चाई की जीत हुई है, आम आदमी की जीत हुई है, वोटर की जीत हुई है, और आम शिवसैनिक की जीत हुई है। और भारी संख्या में जो शिवसेना के पदाधिकारी है, नेता है, जो बच्चे कुचे वहां पर है, वो भी हमारे साथ शामिल हैं। मुख्यमंत्री कहाँ हैं? उन्होंने अभी पहला रिएक्शन दिया है कि सेइंग दैट दिस इज द विन ऑफ टीचिंग्स ऑफ बालासाहेब ठाकरे एंड आनंद दिघे। जी, मुख्यमंत्री आज कहाँ है? नहीं, मुख्यमंत्री महाराष्ट्र में है, लेकिन मैं महाराष्ट्र के बाहर हूँ। जी जी,
तो ये माना जाए कि एकनाथ शिंदे का जो आप लोग सबकी, अब आप लोग इसको बहुत बड़ी जीत मानते हैं, और जाहिर सी बात है ये बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि जो लेगेटी डिबेट है वो सेटल हो गया। और ये भी एकनाथ शिंदे का कहना है कि जो टीचिंग्स है, जो विश्वास उन लोगों को था, बाला साहब ठाकरे ने जो उनको सिखाया था, पढ़ाया था, वो एकनाथ शिंदे का कैंप उस पर चल रहा था, और जो उद्धव ठाकरे कैंप था वो नहीं चल रहा था उनके बताए हुए रास्ते पर। नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि जैसे मैंने कहा, ये जो मैंडेट 2019 में दिया था, ये मोदी जी और बाला साहेब ठाकरे जी के लिए दिया था, हिंदू हृदय साम्राज्य के बाला साहेब ठाकरे जी, और जो हिंदुत्व के आज पूरे लोकनायक कहो, जननायक कहो। एकनाथ शिंदे is speaking, just hold on to your thoughts, let's cut straight to it. दोन्ही आलेलं आहे, काय सांगाल त्याबद्दल? अखेर सत्याचा विजय झाला. बाळासाहेब आणि आनंदीगे साहेबांच्या विचारांचा विजय आहे, आणि बाळासाहेबांच्या विचारांची आणि आम्ही घेतलेला जो निर्णय आहे त्या विचारांबरोबर एकरूप झालेल्या आमदार, खासदार, लोकप्रतिनिधी, पदाधिकारी आणि असंख्य हजारो लाखो शिवसैनिकांचा हा विजय आहे. हा लोकशाहीचा विजय आहे. या देशात भारतीय घटनेत बाबासाहेबांच्या घटनेप्रमाणे कारभार चालतो, आणि आम्ही निर्णय घेतला, या राज्यामध्ये जो घटना आहे, नियम आहे, कायदा आहे, आणि आमचं सरकार जे आहे या घटनेच्या आधारावर स्थापन झालं, कायद्याने झालं, नियमाने झालं. त्यामुळे आजचा जो निर्णय आहे निवडणूक आयोगाने दिलेला, तो बाय मेरिटवर दिलेला निर्णय, आणि हा निवडणूक आयोगाला देखील मनापासून धन्यवाद देतो. I thank the election commission heartily for this decision. खोकेरांचा निर्णय आहे अशा पद्धतीच्या टीका अजूनही केल्या जाते. तुम्ही म्हणतात लोकशाहीने, आता संजय राऊत यांची प्रतिक्रिया आली पाहिजे. तुमच्या बाजूने चिन्ह आणि दोन्ही आलेलं आहे, काय सांगाल त्याबद्दल? अखेर सत्याचा विजय झाला. बाळासाहेब आणि आनंदीगे साहेबांच्या विचारांचा विजय आहे. This is the victory of truth. This is the victory of the ideology put forth by Anand-Dighe and Balasaheb Thackeray. बरोबर एकरूप झालेल्या आमदार, खासदार, लोकप्रतिनिधी, पदाधिकारी आणि असंख्य हजारो लाखो शिवसैनिकांचा हा विजय आहे. हा लोकशाहीचा विजय आहे. या देशात भारतीय घटनेत बाबासाहेबांच्या घटनेप्रमाणे कारभार चालतो, आणि आम्ही निर्णय घेतला, या राज्यामध्ये जो घटना आहे, नियम आहे, कायदा आहे, आणि आमचं सरकार जे आहे या घटनेच्या आधारावर स्थापन झालं, कायद्याने झालं, नियमाने झालं. त्यामुळे आजचा जो निर्णय आहे निवडणूक आयोगाने दिलेला, तो बाय मेरिटवर दिलेला निर्णय, आणि हा निर्णय दिल्याबद्दल मी निवडणूक आयोगाला देखील मनापासून धन्यवाद देतो. लोकशाहीला धरून हा निर्णय नाही, खोकेरांचा निर्णय आहे अशा पद्धतीच्या टीका अजूनही केल्या जाते. तुम्ही म्हणतात प्रतिक्रिया आली पाहिजे. तुमच्या बाजूने चिन्ह आणि दोन्ही आलेलं आहे, काय सांगाल त्याबद्दल? अखेर सत्याचा विजय झाला. बाळासाहेब आणि आनंदीगे साहेबांच्या विचारांचा विजय आहे, आणि बाळासाहेबांच्या विचारांचा आणि आम्ही घेतलेला जो निर्णय आहे त्या विचारांबरोबर एकरूप झालेल्या आमदार, खासदार, लोकप्रतिनिधी, पदाधिकारी आणि असंख्य हजारो लाखो शिवसैनिकांचा हा लोकशाहीचा विजय आहे. या देशात भारतीय घटनेत बाबासाहेबांच्या घटनेप्रमाणे कारभार चालतो, आणि आम्ही निर्णय घेतला, या राज्यामध्ये जो घटना आहे, नियम आहे, कायदा आहे,
आणि आमचं सरकार जे आहे या घटनेच्या आधारावर स्थापन झालं, कायद्याने झालं, नियमाने झालं. त्यामुळे आजचा जो निर्णय आहे निवडणूक आयोगाने दिलेला तो बाय मेरिटवर दिलेला निर्णय, आणि हा निर्णय दिल्याबद्दल मी निवडणूक आयोगाला देखील मनापासून धन्यवाद देतो. या जर बघितलं तर विरोधकांकडून आता टीका केली जाते की लोकशाहीला धरून हा निर्णय नाही, खोकेयांचा निर्णय आहे, अशा पद्धतीच्या टीका अजूनही केल्या जाते. तुम्ही म्हणतात लोकशाहीने, आता संजय राऊत यांची प्रतिक्रिया आली पाहिजे. तुमच्या बाजूने चिन्ह आणि हे दोन्ही आलेले आहे, काय सांगाल त्याबद्दल? अखेर सत्याचा विजय झाला. बाळासाहेब आणि आनंदीगे साहेबांच्या विचारांचा विजय आहे, आणि बाळासाहेबांच्या विचारांची आणि आम्ही घेतलेला जो निर्णय आहे त्या विचारांबरोबर एकरूप झालेल्या आमदार, खासदार, लोकप्रतिनिधी, पदाधिकारी आणि असंख्य हजारो लाखो शिवसैनिकांचा हा विजय आहे. हा लोकशाहीचा विजय आहे. या देशात भारतीय घटनेत बाबासाहेबांच्या घटनेप्रमाणे कारभार चालतो, आणि आम्ही निर्णय घेतला या राज्यामध्ये जो घटना आहे, नियम आहे, कायदा आहे. Eknath Shinde, they are saying that this is a moment of great victory for him, but this is a great moment for the Shiv Sena and also for the people of Maharashtra, because his faction, his group actually stood for the real values and principles of Balasaheb Thackeray. Is it almost game up for Uddhav Thackeray? Sanjay Gupta ji, this is a massive setback, but this will be seen as if your party doesn't have its MLAs and MPs and councillors with you, then what really is the purpose of a political party? Who is standing with Mr. Uddhav Thackeray? देखिए, ये जो फैसला इलेक्शन कमीशन का है और ये अंतिम फैसला नहीं है. अभी उच्चतम न्यायालय में, अभी हमारे देश में न्याय व्यवस्था है. मैं मान सकता हूं कि मैं आज यही बात कहूंगा कि आज बालासाहब ठाकरे का नाम ले लेकर के कुछ लोग किस तरह से ठाकरे परिवार को नीचा दिखाने में लगे हुए हैं. मतलब बाला साहब का नाम लेकर के ठाकरे परिवार को नीचा दिखाने में भी लगे हुए हैं, और जिन बाला साहब ने जिन लोगों को बनाया, चाहे वो बीजेपी है, चाहे वो शिंदे जी हैं, आज वो ही ठाकरे के परिवार को नीचा दिखाने में और मिटाने में अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं. मराठी मानुस में धोखाधड़ी को बहुत बुरा माना जाता है, और इस धोखे को हर कोई देख रहा है. लेकिन संजय गुप्ता जी, अगर विरासत अगर बालासाहब ठाकरे की ये है कि हिंदुत्व प्रिंसिपल्स पे चलना है, तो क्या जो बोल रहा है कैंप वो सही नहीं बोल रहा कि उद्धव ठाकरे ने कॉम्प्रोमाइज किया था उस प्रिंसिपल्स को? देखिए, शिवसेना ने या उद्धव जी ने कोई कांग्रेस पार्टी में अपना विलय नहीं किया. अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी से गठबंधन किया जाता है या उसको उसके किसी मुद्दे पर समर्थन किया जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि उस पॉलिटिकल पार्टी ने अपनी विचारधारा को छोड़ दिया. हमारे देश में सभी पॉलिटिकल पार्टियों ने अलग अलग विचारधाराओं वाली पॉलिटिकल पार्टियों से गठबंधन भी किया, उनसे दोस्ती भी की है. दुश्मनी नहीं है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से. तो कौन सी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है, मुझे आप एक पॉलिटिकल पार्टी का नाम बता दीजिए. अब ये किशन हेगड़े जी बोल रहे थे कि उद्धव जी ने जो है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन किया. तो क्या बीजेपी ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से गठबंधन नहीं किया था? शिवसेना को सत्ता से बाहर करने के लिए 2 दिन के लिए मुख्यमंत्री जब वो बने थे, तब कहाँ गए थे वो आदर्श कि हम तो हिंदुत्व पे हैं? और जब पीडीपी के साथ गठबंधन किया था, तब क्या ये हिंदुत्व वाले आदर्श नहीं थे? 4 साल वहां पर सरकार चलाई. और जब नीतीश कुमार जी से गठबंधन किया, तब क्या उनको ये याद नहीं आया कि नीतीश कुमार जी हिंदुत्व विरोधी हैं? ये किसी दूसरी विचारधारा वाली पॉलिटिकल पार्टी से दोस्ती कर लेने से किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की अपनी विचारधारा नहीं बदलती. लेकिन संजय गुप्ता जी, ये तो इसके लिए तो शिवसेना उद्धव ठाकरे ग्रुप प्रिपेयर्ड था. जो प्रेसिडेंट है, इलेक्शन कमीशन नंबर्स के बेसिस पे जाती है हमेशा. उसी तरह से जनता दल का इशू सेटल हुआ था. अगर एमपीज एमएलए साथ में खड़े नहीं है उनके, और वो एकनाथ शिंदे जी के साथ है, मेजॉरिटी टेस्ट उनके फेवर में है, लेजिस्लेटिव स्ट्रेंथ उनके साथ है, तो जाहिर सी बात है पार्टी का सिंबल उन्हीं को मिलेगा.
नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गलत है। देखिए, लेजिस्लेटिव असेंबली या एमपी या विधायक ये सरकार को बनाने और गिराने में अहम भूमिका निभाते हैं। पॉलिटिकल पार्टियों को बनाने और बिगाड़ने में अहम भूमिका नहीं निभाते। पॉलिटिकल पार्टियों की कॉन्स्टिट्यूशन तो उनके फाउंडर मेंबरों से होती है कि उनके फाउंडर मेंबर क्या कहते हैं। विधायकों से और आपका एमपीओ से इधर से उधर से चले जाने से इससे पार्टी खत्म नहीं होती। पार्टी अगर कोई एमएलए शिंदे ग्रुप में आज जो भी हैं या जो भी सारी पार्टी उनके साथ खड़ी है। 45 एमएलए उनके साथ हैं, 13 एमपीज उनके साथ हैं। आपके साथ खड़ा कौन है? देखिए, अगर केंद्र सरकार ने अपनी ताकत के बल पर उनको डरा करके अपने साथ मिला लिया और आज उनके साथ सरकार बना दी, उनको लालच दे दिया, अगर ये मुख्यमंत्री का पद इसी में से शिंदे जी को देना था तो फिर उस वक्त उद्धव जी को क्यों नहीं दिया? उद्धव जी भी तो जो झगड़ा था 2.5 साल का, क्या 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री तब नहीं दे सकते थे कि एक पॉलिटिकल पार्टी ने जिसने अपने 30 साल का अपने हमेशा सत्ता के साथ समझौता किया, जिस पॉलिटिकल पार्टी ने अपने 50 साल का संगठन पूरे देश में बीजेपी को दिया, वो 2.5 साल का मुख्यमंत्री क्या उद्धव जी को देने में क्या दिक्कत थी? आज जैसे संजय गुप्ता जी, थैंक यू सो मच। वी हैव विनय देशपांडे, Mumbai Bureau Chief, joining me now. Vinay, you heard from the Chief Minister. We have heard all the sides except from, Aditya Thackeray or Uddhav Thackeray. Are they expected to speak? Well, yes, Thackeray is in fact going to hold a press conference at 8:30 today at his residence. This purely as a shock for his party right now. We expect him to put forth his position in some time. There seems to be some problem with that line, but Vinaya, they are saying that Uddhav Thackeray, after losing the symbol war and also losing the party to Eknath Shinde, will be holding a press conference at his home at 8:30 p.m. But celebrations happening in the Eknath Shinde camp, which has got the real Shiv Sena symbol, which is the bow and arrow symbol, and they can perhaps now say that they are the real Shiv Sena, the party. Its MPs, MLAs, councillors, local body members all stand with him. Ananya, who's tracking this story in the Supreme Court, is joining us as well. Ananya, what is the question before the Supreme Court? Now that the Election Commission has settled the symbol debate, what is it that is being contested in the Apex Court? Well, what is being contested before the Apex Court is basically whether these MLAs that were disqualified for changing their faction can actually come back, or whether the Speaker can actually decide on their disqualification petition or not, which was well settled by the Namam Rebia judgment of the Supreme Court in 2016. However, there was a challenge made to it, and there are certain other issues that the Constitution bench of the topmost court of the country is dealing with. But at the same point of time, the EC order can also come in way, and in fact, the Election Commission's order can be challenged before the Supreme Court. What we are being told by our sources in the legal team of both of these factions is that the Uddhav Thackeray camp is likely to approach the topmost court of the country in order to challenge this particular order. However, deliberations are still underway. Meetings are taking place as to what is exactly the scope of this judicial review that can take place, because remember that it's an order of a constitution body, and the scope has to be seen when this judicial review would be sought by, in fact, the Uddhav Thackeray faction in this particular case. So definitely the deliberations by the legal team are underway, and they are in a plan to challenge this particular order, that's for sure. But what would be the forum? Ananya, thank you so much. So the big political story that is breaking on CNN News 18 is the developments taking place in the politics of Maharashtra, where it is a huge, massive setback for Uddhav Thackeray with his party symbol now going completely towards Eknath Shinde. Has this really settled the real Shiv Sena debate? A story we'll continue to track very closely. Thanks so much for watching. This has become a routine affair in the last few years. In November last year, the Yuan Wang 6 had entered the Indian Ocean just days before India was to conduct a ballistic missile test from the Andaman and Nicobar Islands. In August of last year, the Yuan Wang 5 was spotted in the China-leased Hambantota port in Sri Lanka. This led to a direct spat between New Delhi and Colombo. The Yuan Wang class of ships are used to track satellites and intercontinental ballistic missile launches.
In January of 2021, a Chinese survey ship named Shangyang Hong 3 was also seen operating in the Indian Ocean. Now, China has become more and more assertive about its national and maritime security interests in the Indian Ocean region. The deployment of such ships highlights scant Chinese respect for peace in international waters. China believes that it needs to keep a watch on the activities of India in the Indian Ocean because it is a major regional player in this part of the world as well. China thinks that its interests lie in protecting the geo-economic architecture created as a result of its Belt and Road Initiative, in which these sea lanes are important. The People's Liberation Army Navy is also known to patrol the Indian Ocean as part of Beijing's Far Seas protection strategy. Routine patrols are also undertaken on the pretext of anti-piracy missions. Now, no navy has grown as rapidly as the Chinese Navy in recent times. So how does India stack up against the PLA Navy? When it comes to number of personnel, the Indian Navy has a little over 140,000, whereas the Chinese have over 300,000. In terms of fleet strength, the Indian Navy has just a shade under 300 warships. China has more than 700. The Indian Navy has 18 submarines as of right now, whereas the Chinese Navy has more than 3 times that. When it comes to aircraft carriers, both navies have 2 each. The Indian Navy has 11 destroyers and the Chinese have 50. But it's not just India. China has been showing its high-handed behavior with other navies as well, and not just in the Indian Ocean region. In 2012, China took control of the Scarborough Shoal. That's a disputed territory claimed by both China and the Philippines. This was after a massive standoff with the Philippines Navy. In 2014, a Chinese oil rig was placed in waters claimed by Vietnam. It led to a confrontation between Chinese and Vietnamese fishing vessels. In 2016, a Chinese Coast Guard vessel rammed into a Vietnamese fishing boat in disputed waters, leading to protests from the Vietnamese government. In 2018, a Chinese naval ship entered Indonesian waters without permission, leading to a diplomatic protest. China has also increased its military presence around Taiwan, which it considers to be a renegade province. And joining me now is Professor Brahmachalani. He's a strategic affairs expert and also a very close China watcher. I want to first ask you about what the Navy chief said, and how would you compare the current state of equations when it comes to the Indian Ocean region between the Indian and Chinese navies? How can India qualitatively up its game in the IOR? The Indian Ocean is a bridge between Asia and Europe. It's also the world's premier energy and freight seaway. And China's growing interest in the Indian Ocean draws strength from its aggressive expansionism in the adjacent South China Sea. In the South China Sea, China has redrawn the geopolitical map incrementally. And I think it's very important to look at the challenge that China is beginning to mount against India in the Indian Ocean in a historical context. China became India's neighbor only in 1950-51 by gobbling up the buffer Tibet. Now, even as Indian and Chinese forces remain locked in standoffs along the Himalayas, the growing emergence of a Chinese oceanic threat signifies a transformative change in India's security calculus. It's important to remember that Peninsular India has a vantage location in the Indian Ocean region. India is positioned dominantly astride vital sea lanes of communication. But despite India's inherent maritime leverage and advantage, its land frontier compulsions have instilled a landlocked mindset. In other words, India has a land-oriented defense strategy. Most of its defense budget goes to the army. Mm-hmm. And in the Indian Ocean, China is seeking to incrementally chip away at India's natural geographic advantage. Well, it's not just India, is it? I mean, there are several other smaller countries, Philippines, Vietnam, Indonesia, with whom China has meddled around with. So when you talk about even something like the Quad, which is now a formal sort of coming together of 4 countries, it doesn't have any of these smaller countries or their navies. Why is it that we're not seeing, if not a coalition, at least a grouping of these smaller countries that are affected by China's high-handed behavior in the high seas, coming together to collectively take on this bully? Because forming a coalition against
China of this kind presents a formidable challenge because first, the smaller countries are dissuaded from joining any anti-China coalition, and even the big powers. If you take the United States, Australia, they're not willing to join or form an openly anti-China coalition. In fact, the Quad, despite its maritime focus, Namaste and welcome to this edition of The Right Stand. I'm Anand Narasimhan. US billionaire who's Hungarian-born or has Hungarian roots, George Soros, has come out in the open with his intent to go ahead